Good evening, dear students. Today I will deal about the next chapter of class 8 biology, that is conservation of plants and animals. In this chapter we dealt about all the outtakes question of this chapter. Our first question is select the correct option. Okay, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Select the first option में a natural habitat where wild animals are protected. A natural habitat. Natural habitat means in situ conservation. In situ conservation means where the animals are protected in their natural habitat. These are basically three: national park, sanctuaries and biosphere reserves. So here all the three options are present. So the correct option is option 4, that is D. Now the second question is Project Tiger. In order to conserve tiger, the Project Tiger in India was started in. Project Tiger India में कब start हुआ था? 1990, 1972-73, 2007-8 or not started? The correct option is 1972-73. Third question is total number of national parks in India. Out of this four options, 10, 77, 20 and 55, the correct option is 77. Now the fourth question. Which is an endangered species? First of all, the question is, what do you mean by the endangered species? Those species which are exploited in such a rapid rate, if at a present situation we are not conserving it, then in the future this species totally become extinct. वो पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा. इसमें आंसर क्या होगा? टाइगर. Now what is the question number? Reason for deforestation. Deforestation means cutting of trees on a large scale. The first option is construction of building. Second option is paper industry. For paper industry, we automatically cut plant or trees because we get the raw material from them. Third is construction of roads. We also know that these general highways what nowadays are increasing due to overcrowding of the vehicles. Large number of trees are cut down. And final is all of this. If we see the reason for deforestation, all these three options are appropriate and 100% correct. So the proper option is option D. That is all of this. ठीक है? तो आप लोगों को समझ आ गया? अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में जाएंगे. सेकेंड क्वेश्चन इज fill in the blanks. Second option is, second question, fill in the blanks. Fill in the blanks. Okay. Now fill in the blanks. First, a place where wild animals, a place where wild animals are protected in their natural habitat is called a what? Is called, second question, the species found, the species found only in a, the species found only in a particular area. The species found only in a particular area are known as blank. Question 3.
Question 3 is migratory birds fly to far away places because of dash changes. Next, fourth is flora are trees. Flora are trees and plants of a particular area. Fifth is all of the animal species of the ecosystem are collectively known as. Okay, this is the fifth option. Now, a place where wild animals are protected in their natural habitat is called. What is the correct answer? Wildlife sanctuary. आंसर क्या होगा? Wildlife sanctuary. Wildlife sanctuary. Second question. The species found only in a particular area are known as. जो species एक particular area में पाया जाता है, except that area it is found nowhere in the world, it is called endemic. ENDEMIC. Now the third question. थर्ड क्वेश्चन क्या है? माइग्रेटरी जो बर्ड है, जैसे कोलोराडो नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान, वहां पे हर साल ड्यूरिंग द विंटर सीजन साइबेरियन बर्ड्स migrate and came to Colorado National Park. So migratory birds fly to far away places because of what? Because of climatic changes. Fourth, flora are trees and plants of particular. Flora का मतलब trees और plants होता है, किसका? Particular area. And the last, fill in the blanks. All of the animal species of a ecosystem. जब सभी प्लांट और ट्रीज को पर्टिकुलर एरिया का फ्लोरा बोलेंगे तो सभी एनिमल स्पीसीज को इकोसिस्टम का फौना बोलेंगे. FAUNA. सो दिस इज द करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ ऑल द 5 क्वेश्चन. ओके, अब हम लोग क्वेश्चन 3 में आएंगे. क्वेश्चन 3 इज मैच द फॉलोइंग. ठीक है, Question 3. Match the following. Match the following. Column A, column B. Okay. Now first, deforestation. Second option, reforestation. Third, sanctuary.
Fourth option, biosphere reserve. Biosphere reserve. Fifth, red data book. Red data book. Now column B, first 421, second, ठीक है, 14, third, endangered species, endangered species, fourth, planting trees, and fifth, cutting down trees, तो फर्स्ट ऑप्शन इज डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन का करेक्ट मैच क्या होगा? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज. तो ये होगा 1 का करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. रिफॉरेस्टेशन मींस प्लांटिंग ट्रीज, तो 2 का होगा डी. सेंचुरी, ठीक है, सेंचुरी कितना होगा? 3 का हो जाएगा ए. बायोस्फीयर रिजर्व टोटल 14 है इंडिया में. एंड रेड डाटा बुक लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज 5. तो दीज आर द करेक्ट ऑप्शन. इधर से भी करके दिखाते हैं. डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज. रिफॉरेस्टेशन, planting trees. Sanctuary 421, biosphere reserve 14, and red data book is a list of endangered species. So these all are the correct matching of question number 3. Now question number 4. 4 is tick correct or incorrect. Tick correct. And incorrect. First, temperature of the earth. Temperature of the earth rises due to deforestation. Second question, deforestation has no effect on desertification. Third, endemic species are found naturally in other. Fourth, giant squirrel is endemic species of Panchmari. ठीक है. And fifth, paper cannot be recycled. Paper
कैन नॉट बी रिसाइकल्ड. अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है. वी हैव टू आइडेंटिफाई विच स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. टेम्परेचर ऑफ द अर्थ राइजेस ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, यानी कटिंग ऑफ ट्रीज के कारण टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीज होता है. दैट इज राइट, बिकॉज व्हेन द अर्थ is lacking trees, what the function of trees? Tree balance the percentage of carbon dioxide in the atmosphere. When the CO2 is more than excess due to less amount of trees in the earth, CO2 is acting as a greenhouse gas. They trap higher amount of infrared light, which lead to the increase in the temperature of the earth. So option 1 is correct. Next, deforestation, that means cutting of trees, has no effect on desertification. Very wrong answer, very wrong option. Why? लगातार जब deforestation होगा, when large plants are cutting down, the soil become loose. Why the soil become loose? The roots of the plant, जो plant का root होता है वो मिट्टी को पकड़ के रखता है. They are anchoring the soil, and due to strong wind or blowing water, they are not blown away by them. But when there is no tree, there is no root, and when there is no root, there is no anchoring of the soil. The topsoil become loose and it can be easily blown away by the wind or water. That leads to desertification. So this is a incorrect option. Endemic species are found in other areas. Never. Endemic species are those species which are found exclusively in a particular area. Except that area, it is found nowhere in the world. So this is a incorrect option. Giant squirrel is endemic species of Panchmari. Yes, it is right. And last is paper cannot be recycled. This is 100% incorrect. The rat pickers, जो हमारे घर में पेपर लेने आते हैं, these papers, what they are taking from us, they are transferring it to the paper industry. And in the paper industry, it is recycled and again a fresh paper is produced. So it is a incorrect option. Okay. So this is question number 4. Take correct and incorrect answer is totally completed. अब हम लोग जाएंगे question number 5 में. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Why should we save paper? ठीक है. Make a list of activities by which we can save paper. Sorry. Answer. Common example. Paper, ठीक है, is made. We all know that paper is made by the raw material obtained from plants and trees. ठीक है. So if we cannot save paper,
we have to cut plants and trees to get their raw material. We have to cut plant and trees to get their raw material. ठीक है? And it is one of the major reason of deforestation. ठीक है? डिफॉरेस्टेशन यानी कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल, इसका एक कारण पेपर इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना भी है. ठीक है? सो वी हैव टू सेव पेपर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक अ लिस्ट ऑफ द एक्टिविटीज बाय विच वी कैन सेव पेपर. हम किस तरह के एक्टिविटीज से पेपर को सेव कर सकते हैं उसका एक लिस्ट बनाएंगे. ठीक है? तो पहला, पेपर कैन बी सेव्ड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटीज. फर्स्ट इज don't use paper unnecessarily. ठीक है? Don't use paper unnecessarily. If you don't want a paper, we don't use it. Okay? And especially we don't use paper in unnecessary work. ठीक है? जैसे स्कूल में क्या होता है, मान लो डस्टर नहीं है तो हम एक अच्छा पेपर को कॉपी के पेज से फाड़े और उसको रब करने लगे बोर्ड पे. दैट इज वेरी इनकरेक्ट, बिकॉज वी आर नॉट डिस्ट्रॉइंग द पेपर, वी आर डिस्ट्रॉइंग द ट्रीज, एंड व्हेन वी आर डिस्ट्रॉइंग द ट्रीज वी आर डिसबैलेंसिंग आवर इकोसिस्टम. ओके. सेकेंड, स्टॉप children from tearing papers from notebook. ठीक है? ये भी एक है. थर्ड क्या है? यूज बोथ साइड ऑफ पेपर. पेपर का दोनों साइड हमेशा प्रॉपर यूज होना चाहिए. ठीक है? और लास्ट, डोंट यूज पेपर फॉर फायर. डोंट यूज पेपर फॉर फायर. एंड फिफ्थ, यूज्ड पेपर्स आर, ठीक है, आर रीबैक टू द पेपर factories so that they can recycle it. ठीक है? ये हो गया टोटल क्वेश्चन का आंसर. क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे. द सिक्स्थ क्वेश्चन इज हाउ हैज डिफॉरेस्टेशन लीड टू रिड्यूस रेनफॉल. ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है कि नहीं? कंसेप्चुअल भी है. हाउ
has deforestation led to reduce rainfall? Explain. ओके, देखो प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक their food by the process of photosynthesis. By the process of photosynthesis. Thus, they are also balancing the thus they are also balancing the percentage of carbon dioxide in the atmosphere. Which is also a greenhouse gas which trap the infrared light to maintain the temperature of earth. When deforestation takes place, deforestation मतलब cutting of trees on a large scale, it results into increase in CO2 concentration abnormally. So the temperature of the earth also increases. So the temperature of the earth also increases, which affect the so the temperature of the earth also increases, which affect the water cycle. ऑटोमेटिकली इंक्रीज टेम्परेचर क्या करेगा, अर्थ में वाटर साइकिल को इफेक्ट करेगा, thus रिड्यूसिंग रेनफॉल. इसके कारण रेनफॉल जो है वो तुम्हारा बरसात जो है उसका फ्रीक्वेंसी घट जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया डिफॉरेस्टेशन का आंसर. हमने कहा कि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है अपना फूड बनाने के लिए बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ठीक है, साथ ही साथ जब वो CO2 को यूज कर रहा है तो वो बैलेंसिंग कर रहा है किसको, परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, विच इज कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, जो कि ये ग्रीन हाउस गैस भी है और इसका काम है टू ट्रैप द इंफ्रारेड लाइट. व्हाई? टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. लेकिन जब डिफॉरेस्टेशन होगा, व्हेन डिफॉरेस्टेशन टेक्स प्लेस, व्हाट हैपेंस? इट रिजल्ट्स इनटू इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन. एंड इंक्रीज इन CO2 जो कंसंट्रेशन होगा वो कैसा होगा, एबनॉर्मली. उसका रिजल्ट क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ द अर्थ आल्सो इंक्रीजेस एबनॉर्मली एंड thus it affect the water cycle, and which in turn reduces rainfall. So this is the correct answer of question number 6.
नाउ क्वेश्चन नंबर 7, why we conserve बायोडाइवर्सिटी। हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करेंगे? ठीक है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी वर्ड को तोड़ो, बायोस मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन। ठीक है, दिस अर्थ हैज अ वेरियस type of or very enriched biodiversity. Why? Because no single organism in this earth can live alone. To maintain their life, they require at least the help of another organism. And to cater to their need, this biodiversity is very important. ठीक है, तो आंसर होगा क्या? आंसर होगा, ठीक है, we should save, we should save our diversity. We should save our diversity because existence for single kind, because existence for single kind of life is not possible. एक सिंगल लाइफ के लिए इस अर्थ में अकेले एलोन सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है, इज नॉट पॉसिबल ऑन दिस अर्थ, ऑन अर्थ। ठीक है, तो क्या होगा? ड्यू टू बायोडाइवर्सिटी, ड्यू टू biodiversity, due to biodiversity, balance between living organism, balance between living organism, okay, is maintained on the earth, is maintained on the earth। ठीक है, और बैलेंस बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेंटेन्ड ऑन द अर्थ। देखो, व्हाई शुड वी कंजर्व डाइवर्सिटी? वी शुड कंजर्व डाइवर्सिटी बिकॉज एग्जिस्टेंस फॉर सिंगल काइंड ऑफ लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन दिस अर्थ। नाउ ड्यू टू बायोडाइवर्सिटी, दैट इज वेरिएशन ऑफ लाइफ, बैलेंस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेंटेन्ड ऑन द अर्थ। समझ आया? That is why we should conserve diversity. Now let's come to question number 8. Question number 8 is, some tribal depends on forest. How? We all know that tribals means हिंदी में आदिवासी लोग। Tribals are living in or around the forest. They are depending on the forest for their day-to-day need. They worship the forest, and so if we destroy forest, we directly or indirectly destroying the life of the tribals. Question 8. Question 8 is, some tribals depend on forest. How? Some tribals depend on forest. How? ओके, अब क्वेश्चन देखो, आंसर। ट्राइबल्स, ठीक है, क्या है? ट्राइबल्स आर पीपल हु आर लिविंग इन or around forest. They depend on forest. वो फॉरेस्ट के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर होता है। डिपेंड ऑन फॉरेस्ट
to meet their day to डे रिक्वायरमेंट, वो फॉरेस्ट के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर है अपने रिक्वायरमेंट की पूर्ति के लिए, अपनी जरूरत की पूर्ति के लिए, मीट देयर रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो वी कैन से दैट ट्राइबल्स डिपेंड्स ऑन forest. Okay, now question number 9 क्या होगा? 9 है protected forest were also not completely safe. Protected forests were, ठीक है, protected forest are also not completely safe for wild animals. Why? Question is why? Protected forest जैसे कि नेशनल पार्क, sanctuaries, okay, biosphere reserve, these are protected forests, but then also wild animals are not safe. Why? Answer is protected forests are not safe for wild animals, as some people to fulfill their greed, that is to earn money by selling skin, that is to earn money by selling skin, flesh, teeth of animal, ठीक है, because some people to fulfill their greed, अपने लालच की पूर्ति के लिए क्या करता है, they earn money by selling skin, flesh, teeth of animals, ठीक है, even in a protected forest, ठीक है। सो प्रोटेक्टेड एरियाज आर नॉट सेफ, समझ आया? इसमें मेन ग्रीडी पीपल्स हैं, जैसे वो ट्री को भी काटते हैं, इंपॉर्टेंट ट्रीज को, वाई? टू सेल देम टू द मार्केट इन हाई प्राइस। वाइल्ड एनिमल्स को क्यों मारते हैं? उनके स्किन के लिए, उनसे लेदर, बैग, डिफरेंट आर्टिकल्स बनता है, जैसे हाथी का दांत है, आइवोरी, उससे डिफरेंट यूटेंसिल्स बनता है। फ्लेश का बहुत सारे ऐसे एनिमल्स के फ्लेश का बहुत ज़्यादा फॉरेन मार्केट्स में हाई प्राइस है, तो वो अपने ग्रीड की पूर्ति के लिए, अपने लालच की पूर्ति के लिए उनको मारते हैं, इवन इन द प्रोटेक्टेड एरियाज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। Question number 10 is deforestation related to global warming? Is deforestation related to global warming? Explain. Okay, answer. Deforestation leads to
decrease in the plant population which are responsible for maintaining CO2 balance in the atmosphere. ठीक है? When plants are cut on a large scale, CO2 percentage increase at an abnormal rate. CO2 का परसेंटेज abnormal rate में इंक्रीज करेगा, which in turn trap infrared light. ये इसका हीटिंग इफेक्ट होता है. इंफ्रारेड लाइट कमिंग फ्रॉम द अर्थ surface, which in turn trap infrared light coming from the earth surface more than normal. नॉर्मल से ज्यादा उसको ट्रैप करेगा. As a result the temperature of the earth increases abnormally, which leads to, अब जिसका मूल कारण क्या होगा, which leads to global warming. तो देखो डिफॉरेस्टेशन क्या है? It leads to decrease in the plant population, and plant population are responsible for maintaining CO2 balance in the atmosphere. When plants are cut on a large scale, that is deforestation, carbon dioxide percentage increases at an abnormal rate, and which in turn trap infrared light coming from the earth surface more than normal. और जब उन जरूरत से ज्यादा इंफ्रारेड लाइट को ट्रैप करेगा, व्हाट इज द रिजल्ट? द रिजल्ट इज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज एबनॉर्मली एंड दिस लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर. ओके, दैट्स ऑल फॉर चैप्टर 8 क्वेश्चंस. दैट्स ओवर नाउ. This all are related to the midterm examination. Okay, that's all for today. Thank you.